and what was India's contribution in the BRICS setup, and then traditionally it should have been the SCO and then the BRICS, but because we did Quad and then we did AUKUS, and then I thought that because we were going to have some commonality between the groups, I kept SCO deliberately towards the end. One of the reasons, of course, was that SCO has made an appearance in this year's paper, but that absolutely does not stop the UPSC from making it a part of your question paper in the coming years. Now, SCO originated from what is called the Shanghai Five. In 1996, there was a treaty which was called the Treaty on Deepening. I repeat, a treaty on deepening military trust in border regions. So this was the treaty on deepening military trust in the border regions in 1996, which was signed in Shanghai and came into existence, the Shanghai Five. However, in 2006, when Uzbekistan acceded to the SCO or to the Shanghai Five, it was renamed as the Shanghai Cooperation Organization. Over a period of time, it has had annual summits. We'll talk more about the organization as we go, but to give you a perspective of where India joined in the year 2015 at the UFA summit in Russia, India decided to join the SCO, and there was a formal agreement signed in 2017 whereby both India and Pakistan have joined the Shanghai Cooperation Organization. Now, the Shanghai Cooperation Organization has or covers as many as 40% of the world's population. It controls a GDP of almost 20% and has a landmass area of 22%. So if you look at it in comparison to what we did yesterday in BRICS, the difference is only of 1% in terms of population, because BRICS is 41%, whereas we are 40% here. In terms of global domestic power, and the global domestic power is at 24%, or what is called the people's purchasing power. There was 24%, and it is pegged at 20% here. The reason why the areas and all have so much of commonality is, of course, because of the presence of both India and China as part of BRICS and as part of the SCO. I have gone a little fast because I'll write it and show it to you. This is just to give you a background to make you rise up from your sleepy states and understand that if you write this SCO now, you are done with all these organizations. It's pertinent to also point out that when we were preparing for the exam, that is when I qualified in 1995, none of these organizations existed, and we had to suffer SARC and ASEAN, and those organizations have no merit to talk of. But these are very interesting organizations, and so you have better food for thought, something which gives you a global perspective. Why is it important to remember the dates in which these organizations have made an appearance? And what was the reason for the SCO? Now, this is not brought out in any of the paper cuttings, but just to give you my own understanding of the subject matter, it is important to note that at the time when Perestroika and Glasnost made its appearance in the Soviet Union, leading to the breakdown of the Soviet republics, there appeared a vacuum in Central Asia, or what is called Eurasia. So when this block or this vacuum occurred, there were two countries who went ahead forward trying to establish their hegemony in Central Asia. One, of course, was Russia, and the other was China. China has always been plagued with what history calls as the Middle Kingdom complex. Please remember this and use it in your answers if you have not used it so far. This Middle Kingdom complex is that the Chinese government at all times feel that it needs to control the whole of the world from the place where it is. So whether it is the South China Sea, whether it is the Pacific Ocean, or whether it is Central Asia, and of course, it cannot enter into Europe and the US.
although it's trying very hard to do so with its economic ventures, but need to sufficiently say that because of its Middle Kingdom complex, China pursues a very aggressive policy in terms of the area which it occupies and its neighbors. It's this aggressive stand of China which has led to a realignment of forces both in Eurasia as well as the US and the other continents, that is South America and Australia. Having put you in this perspective, let's get back to what is the SCO. So the SCO is said to be an organization which controls 40% of the world's population, 20% of the global GDP, and 22% of the land mass. Now, it is considered to be strategically important as it controls a geographical area which is considered to be a gateway to Central Asia. I repeat, it is considered to be strategically important. It is considered to be strategically important as it controls the gateway to Central Asia. Third, it is considered to be a counterweight to NATO. It is considered to be a counterweight to NATO. It's a permanent intergovernmental, and when you look at its structure, you will realize what I'm talking about. It is a permanent intergovernmental international organization. It is a permanent intergovernmental international organization. If you've written this much, I'm rubbing it out. You please take it from the, otherwise from the video which is recorded, okay? So it's an international organization. Then it's a Eurasian, Europe and Asia, because it includes Russia and the Soviet and the former Soviet republics. So it's a Eurasian political, economic and military. और ये important है आपके लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा सबसे पहले, it is considered to be a counterweight to NATO. तो ये NATO का supplement है एशिया का, तो इस वजह से ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है. तो अभी तक हमने 3 तरह के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए. एक हमने ऑकस देखा जो 15 सितंबर 21 को बना है. हम नेटो के बारे में आपसे हर समय बात करते हैं क्योंकि कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को नेटो से कंपेयर करता है. एंड व्हेन वी गो into the traditional international relations, that is when we talk of the big fives, we will proceed from World War II, and then in that scenario we will discuss NATO. Sufficient for you to tell that there is a military organization in SCO, there's a military organization in AUKUS, and the other organizations, that is BRICS and Quad. Quad तो एक informal organization है जो SCO के साथ में बना. ब्रिक्स जब बना है, एससीओ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, और जब इनफैक्ट 2009 में ये कैटिसबर्ग रशिया में पहली बार ब्रिक्स की समिट हो रही थी, उस समय चाइना ने $10 बिलियन दिए थे शंघाई के सारे पार्टनर्स को. एंड वी विल गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट अ लिटिल लेटर. Sufficient for you to understand that there are 2 military organizations we've spoken of till now. One is AUKUS and the other is Shanghai Cooperation Organization. So it is a Eurasian
political, economic, and military organization. All right. It was created in 2001. Charter was signed in 2002 and it came into being and enforced in 2003. It was enforced in 2003. So discussions about its creation came in 2001. Charter was signed in 2002 and enforced in 2003. The SCO Secretariat, the SCO Secretariat, the SCO Secretariat is in Beijing. The SCO Secretariat is in Beijing. It is a statutory document. Now compare it with Quad. Quad क्या है? Quad एक informal organization है. कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है. जब बना तो उसके बाद 10 years it remained dormant. तो किसके response में बना है Quad? Quad SCO के response में बना है. We will go into why it got created, but as of now you should know that SCO, unlike Quad, it has a statutory document. It is organized. It's an organization with goals and principles. So काफी कागज का काम किया हुआ है चाइना ने, with goals and principles clearly demarcated, and its objectives clearly defined. अब objectives clearly defined है, पर क्या करता है? सिर्फ उसको वायलेट करता है. कौन? चाइना. और रिपीटेडली, एक बार नहीं, बार बार. एंड नॉट ओनली विथ इंडिया, with almost everyone. So it's not a surprise, but it is right now in a dominant position in the SCO. So now what you can clearly understand that after World War II, every kind of organization or every kind of geopolitical hegemony was at the helm of affairs of the USA and the UK. Post the 80s, you see another Asian giant coming into being, leading from the front, and that is China. And China comes up with the Shanghai Corporation, and China comes up with BRICS, and China will come up with something else too. You have to wait and watch. And right now we are talking only of organizations along economic lines. We are talking of organizations along military lines. In times to come, there'll be organizations which will be playing the health card. There'll be organizations which will be playing what is called the era of virtual reality or artificial intelligence. This is the future of what is going to come. When we were studying, China was nowhere in the reckoning. And now when you are taking the civil services exam, you have China at the helm of affairs. So what was in the Cold Era period, Russia and the USA, has now been taken in the present 21st century as what is called the China and the USA being at loggerheads with each other. One of them is going to be replaced, either China or USA. As of now, it seems that USA will be replaced, but we never know. Okay, so that was not a part of the answer. We will go back to the SCO. So it's a statutory document with organized goals and principles and structures which are all very well and clearly defined. Its official language is Russian and Chinese. Its official language is Russian and Chinese. And the chairmanship of the summit, the chairmanship of where the summit will be held, chairmanship of summit is rotated alphabetically, based on the Russian language. So like I told you that the SCO has succeeded the Shanghai Five
which came into existence in 1996 by what is called the Treaty of Deepening Military Trust. Deepening of military trust in border regions. In border regions, which was signed in 1996 in Shanghai, which resulted in the Shanghai Five. Now, when we talk of the Shanghai Five issues, we need to remember that it was the time when the Soviet Union broke down and there were several of the Soviet republics which were sharing a common border with China. So for the demarcation, I repeat, for the demarcation and the demilitarization, to make it clear to you, to maintain the sovereignty and integrity of these chotu Soviet republics, it was decided to create the Shanghai Five. Okay, don't write that. You'll have to write to demarcate and demilitarize all the Soviet republics which had common borders with China. The Shanghai Five came into existence. And from Shanghai Five, when in the year 2001, so it was to demarcate this, I think, I don't know, remember which point we are on. And this is the 10th point. So, to demarcate and demilitarize, to demarcate and demilitarize the border areas that former Soviet republics shared with China. The Shanghai Five came into existence, came into being. Okay, now in 2001, when Uzbekistan joined this group of five, it came to be known as the SCO. And then in what I told you in the beginning, that in the UFA summit in 2015, India proposed to join, and in 2017, both India and Pakistan are members of the SCO. So now, who are the members of the SCO? So we are going to tell you that, of course, there is China, there is Russia, there is India, there is Pakistan, and the original, and then there is Uzbekistan. All right. And along with that, you have what is called the Kyrgyzstan. You have what is called the Tajikistan. And so you have China, Russia, India, Pakistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan as members of. Am I missing out on any one of them? I think I'm missing one because this ought to be 8. Kazakhstan, Kyrgyzstan. So I've not written Kazakhstan. आप 8 के नाम लिखिए प्लीज, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे एससीओ के मेंबर्स यूएनओ में वोट कर रहे हैं. So there's China, there's Russia, there's Kazakhstan, there's Kyrgyzstan, there is Tajikistan, Uzbekistan, India and Pakistan. तो 4 तो बहुत आसान हो गए.
अब कजाक, किर्गिज, ताजिक, उज्बेक आप अपने आप लिख लीजिए. Okay. Other than the members of the SCO, there are something what is called the observer. तो ऑब्जर्वर स्टेट में कौन है? ऑब्जर्वर स्टेट में अफगानिस्तान. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई नहीं उसका एससीओ है. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग अ ग्रुपिंग इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज कम टू एससीओ, हम आपको ज्वाइन करा देंगे. इट इज लाइक it's like the AAP party in India. So it is the observer status is given to Afghanistan, given to Belarus. It's given to Iran. Iran kahin bhi nahi hai abhi. Iran, and then it is given to Mongolia. Do you see a commonality in all the members of the observer status? They are hugely involved in human rights violation in almost all these countries. So that is the common status for the observer status. You have to be a human rights violator to be an observer status in the SCO. All right. Then there is something which is called the dialogue partner. अब डायलॉग पार्टनर कौन कौन है? अजरबैजान है, अजरबैजान. ओके. आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका. So you have China, Russia, India, Pakistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kyrgyzstan for the permanent members, which are 8 now. Observer status में आपके पास अफगानिस्तान है, बेलारस है, ईरान है और मंगोलिया है. डायलॉग पार्टनर में अजरबैजान है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, नेपाल है, टर्की है एंड श्रीलंका. This is the scope of SCO. Alright? Now, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? और ऑब्जेक्टिव करके आपको हंसी आएगी और फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि चाइना कैसे गेम्स खेल सकता है. ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक fair, rational, new international economic and political order. So what is amusing is the fair democratic structure. Anyways, it believes in the establishment of a fair, democratic, rational, न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है. इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर एंड मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन. Peace, security, stability in the region. तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Enhance. Now it wants to ensure and maintain. It wants to ensure and maintain peace, security, stability in the region. I mean, if China and Pakistan are members of the SCO, is it possible? You need to ask yourself that. Okay, anyways. So it wants to enhance ties. इसीलिए बोलते हैं कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप उसको बहुत डॉक्यूमेंट करते हैं, बिकॉज झूठ को प्रूफ करना पड़ता है. सच्चाई को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है. Somebody asks you to prove yourself. Somebody asked me to prove myself if I was honest. And believe me, I had no answers to that. Ask yourself this. जब आप झूठ बोलते हैं तो उसको 10 तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं, पर जब आप सच बोलते हैं तो आपको किसी के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट SCO इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड. Reason being that it wants to tell its lies in a very documented way. That is the only way you can lie. So it wants to enhance. These comments can never be part of your answers.
And I will not make any such comment because some of you might just get carried away. Okay, it has to enhance ties in education, in energy, environment, tourism, and of course, research in science and technology. In science and technology. Okay. Then it wants to strengthen. It wants to strengthen mutual trust. It wants to strengthen mutual trust. And please look at this word. And neighborliness. Neighborliness. I love this word. Strengthen mutual trust and neighborliness amongst the member states. अब क्या neighborliness और mutual trust है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और क्या neighborliness और mutual trust है इंडिया और चाइना के बीच में? One needs to understand that. All right. To strengthen mutual trust and neighborliness amongst the member states. ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव हो चुके. It is also guided by the goals. क्या है? Guided by the Shanghai spirit. और Shanghai spirit क्या है? It is guided by the Shanghai spirit. आपसे पूछा जाएगा कि Shanghai spirit क्या है, तो आप क्या बताएंगे? It is guided by the Shanghai spirit, which includes principles of non-alignment. जब भी आपको झगड़ा करना हो, वॉर करना हो, कहीं का किसी की एरिया को ऑक्यूपाई करना हो, सबसे पहले अपने प्रिंसिपल को कौन सा बना लीजिए? प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट. The principle of non-alignment is so non-aligned that it can be used in any paraphrasing of any organization. So SCO is also based on non-alignment. I mean, that is a big surprise since its very existence is one of alignment. It has come as a counterweight to NATO. It has come to control the hegemony of USA in Central Asia. And that is the reason that the US jumped into the Indo-Pacific region, fearing a China occupation of that area too. And therefore you see Quad, AUKUS coming up in those regions. That is the fallout from this SCO grouping, that the South China Sea or the Indo-Pacific region is trying to be bolstered up or try to be controlled by the USA and its allies to ensure. So what does it say? To be guided by the Shanghai spirit on principles of non-alignment. On principles of non-alignment, non-targeting any third world country. So SCO has come out as a voice for the third world countries, for the developing economies, trying to propagate its hegemony in Asia. And Asia is plagued by one overriding principle, which is called poverty. इतनी गरीबी है इस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, बट एशिया में रिसोर्सेज होने के बावजूद इतनी ज्यादा गरीबी है because of the density of population, because of geopolitical reasons, because of pockets of wealth being put in small places and the others being left below the poverty line. We have to face this scenario of a big brother attitude of China, which is only coming to eat into the plates or the economies of almost all the countries of the SCO, all the countries who are there in BRICS, and any other place where China deems fit, because it has the advantage of an economic trade surplus with all the countries of the world. That is the importance of China in today's economy.
It has a balance of trade plus with all the world countries. Having that stature, China is now bulldozing aggressively into the territorial areas of the countries in and around it, thinking that with this domination, it can always take over North America and, of course, along with it, the Europe. So China has made inroads in the small European countries too, and even Eurasia is being dominated by China. When the Shanghai Five Treaty was signed for the demarcation of borders and demilitarized zones, it was as essential for Russia as it was for China. Forget those border countries. These small Soviet republics have no say. They have a begging bowl in front of China. They have such adverse economic relations with China that as of now they don't have a voice. And amongst these countries, Russia too is included. With the liberalization policy, with the domination of the dollar in the world economy, these countries are suffering with an adverse trade ratio with only one country, that is China, because China has tried to replace every other country of the world in terms of trade. Keep that in background whenever you're talking of or thinking of any organization. Why I'm giving you all these words is because whenever you have to write an answer, there should be some mention of these facts. After all, world politics is not just geopolitical, it is also purely economics. And economics drives like nothing else in the world. That should be very clear to you. So the Shanghai spirit is based on principles of non-alignment and non-targeting any third world country, which of course is a big lie, but that is how it is. Now, what is the internal policy of this organization? The internal policy, ये भी नाम का ही रेपुटेशन है, उसको ही इन्होंने इंटरनल पॉलिसी को जो रीवर्ड किया है वो नाम का है. कहने का मतलब ये है कि आईआर वाले तो नाम पढ़ेंगे भी, बाकी लोग भी नाम को पढ़ के रखिए, सेकंड पेपर में काम आएगा, ऐसे लिखने में बहुत काम आता है. If nothing else, it is a fanciful document with beautiful set of words. If you read and go through it, you can always use it anywhere else. उसकी importance सिर्फ उतनी है, बाकी कोई उसको follow नहीं करता other than India. India follows the non-alignment spirit in every interaction and in every international forum. That is why India has a respect amongst these Eurasian countries which China does not enjoy. Yes, India does want to have a trade surplus with all these countries, but not at the cost of their sovereignty. तो बिल्कुल इंडिया के पास राइट है, अगर वो चीज कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इन देशों में जाके बेच सकता है, पर उसके पास, हमारे देश के पास कोई टेरिटोरियल अग्रेशन की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हम अभी तक नाम को फॉलो करते हैं. तो इंटरनल पॉलिसी में ये क्या कहता है? बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, ये उसी की लैंग्वेज है, नाम की लैंग्वेज है. बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट and mutual benefit. Based on mutual trust and mutual benefit and respect for the cultural diversity and respect for the cultural diversity of all the members of all the countries. ये इसकी इंटरनल पॉलिसी है, ऐसा इसके डॉक्यूमेंट में लिखा है, एससीओ के डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा. अब इसका ऑपरेशंस का रीजन क्या है, इसका स्कोप ऑफ ऑपरेशंस क्या है, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस. अब इनकी उपलब्धियां आपको बताएं कि ये क्या क्या करते हैं. स्कोप ऑफ ऑपरेशंस पे सबसे पहले ये करता है इंट्रा रीजनल एफर्ट्स, intra-regional efforts to curb terrorism. Now, joke, Pakistan is there and we are trying to curb terrorism. Intra-regional efforts to, and then of course the dialogue partner is Afghanistan. So it is trying to curb terrorism
separatism, and extremism. Extremism in Central Asia. तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन में ये टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना चाहता है, कहां पे? सेंट्रल एशिया में. It wants to combat the international drug trafficking. International drug trafficking as a source of financing, global terrorism. इनमें से एक भी काम नहीं करता, पर उसके स्कोप ऑफ ऑपरेशंस में वो कहता है कि हम इंट्रा रीजनल एफर्ट्स करेंगे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को सेंट्रल एशिया में कंट्रोल करने के लिए, और इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करेगा सो दैट इट इज नॉट एबल टू फाइनेंस टेररिज्म वर्ल्ड वाइड. ये इसके दो ऑब्जेक्टिव्स है. फिर इसने फर्दर इसके स्कोप ऑफ ऑपरेशंस में आप अगर आएंगे तो इसने 2003 में SCO के सारे मेंबर्स ने, और तब भारत इसका मेंबर नहीं था, इन 2003 for a period of 20 years it has signed what is called the multilateral trade and economic cooperation. इसके सारे मेंबर्स ने, मतलब जो शंघाई 5 के मेंबर थे प्लस उज्बेकिस्तान, तो 6 लोगों ने मिलकर के ये मल्टीलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन साइन किया है फॉर अ फ्री ट्रेड जोन. फॉर अ फ्री ट्रेड जोन मतलब यहां कहीं भी किसी को भी ड्यूटी नहीं पे करनी है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. फ्री ट्रेड जोन within the territory of SCO members. अब ये बहुत टेक ऑफ करने वाला ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें विभिन्न देश हैं जिनका कल्चर, जिनका ट्रेडिशन, जिनकी लैंग्वेज, जिनके पॉलिटिकल सिस्टम्स बिल्कुल फर्क हैं. ऐसा भी कहा जाता है कि SCO जो बनाया गया है वो इसलिए भी बनाया गया ताकि लिबरल डेमोक्रेसी किसी भी न्यू सोवियत रिपब्लिक, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है, उनमें से किसी में भी लिबरल डेमोक्रेसी अपनी जड़ ना बना पाए. This organization is also set to curb the roots of liberal democracy in all the former Soviet republics, and that is one of the reasons for its formulation. You must understand the economies for these organizations are very, very different. Like I said the other day, China goes with its own imperialistic policy. Russia is almost an oligarchy. India is a democracy. Pakistan is nothing SC. You can't say that even it's a religious state, since it doesn't know where it stands as of now. And the former Soviet republics are in various degrees of economy and various degrees of political system, which they themselves do not know. So, as of now, it can be stated that the SCO came into existence to curb the growth of democracy in the former Soviet republics. This is one of the arguments which is being said in the West about the SCO. So please keep that in mind. Now let us talk about the organization of the SCO. Now, if you look at the organization of the SCO, there is something called what is known as the Council of the Head of States, which is right at the top. So it's a 3-tier system. There's a Council of the Head of States,
And just below it is the Council of the Head of Government. There is a Council of the Head of Government. And below that is what is called the Council of National Coordinators. Council of National Coordinators. And then there is what is called the Secretariat. और जो ये Secretariat है ये बीजिंग में है. And then there are permanent members who advise the SCO Secretariat. Permanent members to the SCO Secretariat. अब इस साइड पे इसके आपके पास फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होती है. उसके साथ साथ आपकी कमिश्नर ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स होती है. कमिश्नर ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स होती है. और आपके पास हो सकते हैं स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स. Closely linked to the Council of National Coordinators, you have what is called the RATs. और ये कहाँ पे? ये ताशकंद में है लोकेटेड. ये बेजिंग में है और ये ताशकंद में है. And RATs has its own permanent representative to the RATS Council. तो RATS जो है आपका ये टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव है. एंड जब कल हम लोग 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात, अलायंस की बात कर रहे थे, 5 आईज अलायंस की बात कर रहे थे एज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, तब हमने आपको बताया था कि एक रैट्स भी बना है एससीओ में जो इस लेयर में काम करता है. और फिर ब्रिक्स ने क्या था? ब्रिक्स ने कहा हम एक काउंटर इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं. तो चाइना और इंडिया ब्रिक्स में ऑलरेडी एससीओ के संग रैट्स के इनिशिएटिव में थे. अब उन्होंने एक लेयर और ज्वाइन कर दी जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका पूरी तरह से कवर्ड होगा. एंड दैट इज व्हाई दैट काउंटर इंटेलिजेंस इनिशिएटिव इन ब्रिक्स was important and I had highlighted it. तो ये रैट्स का ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंट्रोल टेररिज्म. मैं फुल फॉर्म भी अभी आपको बताऊंगी. एंड इट इज लोकेटेड एट ताशकंद. एंड बाय द वे इन 2021 there was a joint exercise of all the SCO members in the area of terrorism. And do you know where that took place? Well, it took place in Pakistan. So we know how much of a success it must be. But coming back to SCO, this is how it functions. So you see that it is a very layered organization. Not only that, it is a very organized, layered organization with a hierarchy clearly established. तो यहाँ पे जहाँ पे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है, ये साल में एक बार मिलते हैं. इसमें जैसे जिंग जियाओपिंग जाएंगे, प्यूटन जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, ये हेड ऑफ स्टेट हो गया. अब काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये कई सारे देशों में प्रेसिडेंट है और यहाँ पे ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है. तो मोदी जी इसमें नहीं जाते, हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे लास्ट टाइम. तो यहाँ पे भी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट जाता है. फिर ये काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. दीज आर ऑल योर हाई लेवल ऑफिशियल्स विच आर नॉमिनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि इसका पूरी वर्किंग देखते हैं. और फिर ये सेक्रेटेरिएट है. तो इसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को कंट्रोल करते हैं. और जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट की समिट होने वाली होती है, उसके 1 महीने पहले सारे फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, एजेंडा को चॉक आउट करते हैं और आगे काम करते हैं. तो इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग फॉर द एससीओ. So far so good. I hope that you guys are with me and have not got off to sleep, because if you have, you need to tell me that.
What here we can needs to be told to you is that the US applied for an observer status in 2005, which was rejected by the SCO. It was rejected by the SCO. तो यूएसए ऑब्जर्वर स्टेटस आपको तब दी जाती है जब आप फिर फाइनल मेंबर बनते हैं, पर इनको ऑब्जर्वर स्टेटस यूएसए को डिनाई कर दिया चाइना ने इन वे बैक इन 2005. और अभी ऑब्जर्वर स्टेटस किस किस को दिया हुआ है, you must know. Okay, now in amidst this there is a country called Turkmenistan. Now please write this. Amidst this former Soviet republics, there's a country called Turkmenistan. Turkmenistan. And Turkmenistan has chosen to be a permanent neutral country. So it's a permanent neutral country and very much part of the UNO, and has said that it will keep maintaining its neutral status. तो जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी कंट्री अपने को न्यूट्रल बताती है तो उसकी प्रोटेक्शन फिर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी इन केस ऑफ एनी मिलिट्री अग्रेशन, उसकी फिर प्रोटेक्शन यूएनओ के को सौंप दी जाती है, यूएनओ टेक ओवर कर लेता है. दैट इज व्हाट इज अज्यूम्ड. सो टर्कमेनिस्तान says that it is going to be neutral in the SCO region. तो वो सेंट्रल एशिया का एक न्यूट्रल कंट्री हो गया. Now, RATS came into existence in 2004. और इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. और इसका एग्रीमेंट हुआ था 2007 में, जबकि ये 2004 में ताशकंद में स्टैब्लिश कर दिया गया और 2007 में RATS has tied up with what is called the collective security, please ignore this, collective security treaty organization. So इसने टाई अप किया हुआ है, RATS ने टाई अप किया हुआ है CSTO. कब? 2007 में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने टाई अप कर रखा है. और अभी तक कहते हैं कि इसने 500 टेररिस्ट पकड़े हैं और 600 टेररिस्ट अटैक 600 टेररिस्ट अटैक को फॉइल किया है. हैव बीन फॉइल्ड. In 2021, in what is called the PABI, PABBI, PABI anti-terror exercise of RATS was to take place in Pakistan. PABI anti-terror attack was supposed to take place last year in Pakistan, in which of course India did not participate. अब तक मैंने आपको इनके इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बता दिया, मैंने आपको इनके टेररिस्ट अटैक्स को किस तरह कंट्रोल करना है वो स्ट्रैटेजी बताई विथ RATS. नाउ वी कम टू व्हाट इज देयर military strategy of the SCO. So under the military strategy of the SCO, there are what is called war games being held since 2005 by Russia and China. बाद में उज्बेकिस्तान ने भी इस
इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है और रशिया ने कहा इंडिया से कि आप भी आइए और ये मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइन कीजिए. बट व्हाट डिड इंडिया चूज? India chose to exercise, to do its military exercises in and around the Pacific and with America and the USA. I mean, America and Australia and Japan. So Quad came into existence facing the SCO threat because of the presence of Pakistan and an aggressive China. Keep that in mind when we are talking about its military strategy. तो ऐसा हुआ कि कोल्ड वॉर के तहत रशिया ने बहुत बड़ी एक आर्मी क्रिएट कर रखी है. अब उस आर्मी का कोई यूज नहीं रहा क्योंकि आपने एससीओ की ट्रीटी कर ली अपने सारे रिपब्लिक्स के साथ, आपने एक फ्री ट्रेड जोन बना लिया. अब आपका एग्जिस्टेंस क्या है? आपने उनको कंट्रोल भी कर लिया. अब आपका एग्जिस्टेंस इस मिलिट्री पे तो है नहीं, बट आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि यू आर स्टिल अंडर द फियर ऑफ द हेजमनी ऑफ USA and its allies. And therefore, Russia keeps falling back and forth between China and the USA, not clearly sure of what it wants to do. But at the same time, it is feeling the pinch of the domination of the US dollar. ये सारे देश जो है, including China, ये US डॉलर की हेजमनी को बस्ट करना चाहते हैं. चाहे कुछ भी इकोनॉमिक्स हो, whether it's BRICS Development Bank, whether it is SCO, the attempt is to create an alternative currency so that bankrupt nations like Pakistan can come forward with a new currency. Now, do you think that the world order can go into it, or will it be able to go into it? You should always keep in mind that the bullions of the world are preserved in terms of pounds. Pounds सबसे ज्यादा महंगी करेंसी होती है वर्ल्ड की. तो जो बुलियंस हैं वो पाउंड्स में मेंटेन होते हैं, उनकी एस्टिमेशन पाउंड्स में की जाती है और डॉलर इज ट्रेडेड इवनली एंड ओपनली अक्रॉस द वर्ल्ड. अब इन देशों का क्या कहना है, मैं आपको उनका क्या कहना है ये बता रही हूँ, अपना व्यू पॉइंट मैं इसमें व्यक्त नहीं करे. बट इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि डॉलर के आंकड़े से आप किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है. आप लिबरलाइजेशन का प्रोसेस भी जो ला रहे हैं वो आईएमएफ के गाइडलाइन से ला रहे हैं, ये भी गलत है क्योंकि हर इन देशों का, नए देशों का कहना है कि हमारे पास कोई इकोनॉमी नहीं हो सकती till we are allowed to develop to that level. So in the meantime, they want that breathing space. They want some kind of loan on which there is no high interest. So they want that kind of an economic mechanism where there is no burden of debt. But as of now, that is not happening. And therefore, all these organizations, especially those with China and Russia, are arguing for a new currency which is not coming into existence. And I don't think that it will come into existence. But you never know. मेरे समय में चाइना था ही नहीं, आपके समय में चाइना डोमिनेंट है, मे बी आपके बाद कोई नई करेंसी वाले भी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाए. So we should just keep our eyes and ears open regarding that. So to tell you that large-scale war games are being conducted as military exercises by China and Russia, by Kazakhstan and Kyrgyzstan in what is called the Eurasian Economic Union. इन्होंने क्या बना रखा है? एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. इसमें कौन कौन लोग हैं? इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रशिया है, कजाकिस्तान है एंड किर्गिस्तान है. और ये जो वॉर गेम्स है ये रशिया और चाइना कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट लाइक एन एनुअल एक्सरसाइज एवरी ईयर in the Ural Mountains and in around countries which share common borders with China. तो ये एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रही है, भारत को बुलाया गया है, भारत ने इसमें अभी तक कोई हिस्सा नहीं लिया है. अब कमिंग बैक टू ब्रिक्स की जो समिट हुई पहली 2009 में रशिया में, कहां पर हुई? इन व्हाट इज कॉल्ड द ये कैटन बर्ग, BERG, जो ये कैटनबर्ग में
जब हमारी ब्रिक्स की समिट हुई 16 जून 2009 को, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम यस्टरडे, 16 जून 2009 में जब ये यकैटनबर्ग में समिट हुई ब्रिक्स की, उसी समय चाइना ने $10 बिलियन ये सारे 5 देश जो थे उनको दिया, took ride over their debt crisis. This happened in 2009. Now, what is being talked of, and what is the future of what is called the SCO? In future, it is being said that Japan, South Korea, and perhaps Philippines and Indonesia may be asked to join the group. If you look at it from India's perspective, what has India's role been so far in the SCO, or what is the way in which SCO is functioning as of now? इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि दिसंबर 2015 में, in December 2015, when there were 6 members of the SCO, all 6 members voted against the human rights violation in Iran. What are we doing now? We are going into the actual working of the SCO. What is SCO's role in the international arena as on date? तो 2015 से अगर आप इसकी फंक्शनिंग देखनी शुरू करें तो 2015 में यूएन असेंबली में 6 के 6 मेंबर्स ने, इंक्लूडिंग चाइना, वोटेड अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन ईरान. ओके, आई रिपीट, इन ईरान. Come to July 2019. जुलाई 2019 में जो उर्गेट, आप लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, that in the Chinese province, और ये मैं 2019 की बात कर रही हूं आपसे, in 2019 in the Chinese province of what is called the Xinjiang. In the Xinjiang province of China, there was large-scale human rights violation of a ethnic Muslim community, which is known by the name of the Uyghurs. आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर इनको उर्स कहा जाता है. इनके साथ साथ एक टर्की कम्युनिटी भी है, टर्की. इन दोनों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ. इसको तो कैमरे में भी लिया गया, जहां पे उन्होंने उर्ग को जिंगजियांग प्रोविंस से निकाल दिया है, और ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हमारा सिनेरियो होलोकॉस्ट का था. If you remember the Schindler's List, if you remember the concentration camps in and around Germany at the time of the Second World War, it is said that the Xinjiang province is being cleansed in the same manner. So there is wide-scale human rights violation of women who are being put to all kinds of human rights violation that one can suffer. They're not allowed to propagate the religion. And what is the only reason for this kind of violation by China is because Xinjiang province is said to have minerals and natural resources which run into millions of dollars. And therefore there is a cleansing of this province. तो 2019 में जब human rights violation इस region की came up for voting in the तो 5 में से 8 देशों ने, 5 out of the 8, 50 countries backed China's politics and human rights upholding in the Xinjiang province. Again in June 2020. तो मतलब इस जो हमारी ग्रुपिंग है 8 की, उसमें से 5 लोग परमानेंटली चाइना से चिपके हुए हैं. तो चाइना कुछ भी करेगा पर ये लोग चाइना को ही सपोर्ट करेंगे. Now you come to the 2020, what is known as the security law of Hong Kong. जो नया security law बनाया है चाइना ने,
हांगकांग के रीजन को, कर्बिंग द political freedom of the people of Hong Kong, was voted in the UN. And again, out of the 50 countries which supported the China's law in Hong Kong, four of them were from the SCO. So four countries have repeatedly voted for China against all its policies of aggression and human rights violation. And time and again, 4 and 5 of them are SCO members, and one we know permanently is Pakistan. अब SCO की वर्किंग में जब ये आता है तो कहा जाता है कि SCO बनाया ही गया है to strangle the voice of liberal democracy in the region. Okay, so it has an anti-democratic stand because of the domination of China. तो 2019 में जब ये URSS के अगेंस्ट वायलेशन हुआ, 2020 में जब हांगकांग के पावर्स को कंट्रोल करने की, फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, दोनों ही बार एससीओ के एक बार 5 मेंबर्स ने और एक बार एससीओ के 4 मेंबर ने चाइना के फेवर में वोट किया. दिस इज एट अ टाइम व्हेन 53 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड in the first instance in 2019, and in 2020 50 countries of the world voted for China, जिसमें से 4 एससीओ के मेंबर्स थे. तो कहा जाता है कि लिबरल डेमोक्रेसी को कर्टेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही एससीओ को बनाया गया है. अब एक थियोरिस्ट आते हैं जिनका नाम है बिग व्यू ब्रिजिंस्किस. अब आप इनके बारे में जान लीजिए और एटलीस्ट you can write about it because it makes a lot of sense. So there is this guy called the Big View. Now Big View, Z is silent. Big View Brzezinskis. और आप ये स्पेलिंग रख लीजिए प्लीज. बिग व्यू ब्रिजिंस्किस ये क्या कहते हैं, इनकी एक थ्योरी क्या है कि इफ यू कंट्रोल द यूरेशियन लैंडस्केप, it is the key to global domination. He says that the control of the Eurasian landmass, the control of the Eurasian landmass, control of the Eurasian landmass is the key to global domination. अब ब्रेजिंस्की जो है ये थ्योरी प्रोपेगेट करता है कि अगर आप यूरेशियन लैंडमास को कंट्रोल करेंगे तो आप पूरे देश पर पॉलिटिकली डोमिनेट करेंगे. तो इस पॉलिटिकल डोमिनेशन को कौन फॉलो कर रहा है? इस पॉलिटिकल डोमिनेशन को पूरा का पूरा चाइना और रशिया दोनों ही इसको फॉलो कर रहे हैं. और यूरेशिया की किसके पास है? इसके आगे, दिस इज नॉट जस्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट ब्रेजिंस्की मेक्स. He says that the control of the Eurasian landmass is the key to global domination, and further says, and control of Central Asia is the key to control the Eurasian landmass or landmass. ठीक है. तो ब्रेजिंस्की कहता है कि अगर आप यूरेशियन लैंडमास को कंट्रोल कर लेंगे तो आप पूरे देश, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे, और यूरेशिया को कंट्रोल करने के लिए आपको सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करना है. तो चाइना और रशिया दोनों ब्रेजिंस्की की इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई एससीओ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. अब इसी के साथ साथ एससीओ क्या करता है? इट इज ट्राइंग टू बैलेंस it is trying to control domination of USA in the area, control domination of the USA in the area, and the NATO alliance. इन दोनों के इन्फ्लुएंस को SCO कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. This is the scenario in which the SCO is working. ये इसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जो अभी एग्जिस्टेंस में है. अब क्योंकि यूएसए ने ऑब्जर्वर स्टेटस मांगा और उसको नहीं दिया गया,
और फिर उसके बाद we talked about Turkmenistan and got a permanent neutral country. According to that, they have done this. Now, what is it in SEO for India? अब अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का कहना यह है कि SEO में एवर सिंस पाकिस्तान इज जॉइंड विद इट और दोनों ने साथ साथ ज्वाइन किया, India was very apprehensive about its role in the SEO. However, India is considered to be an alternative to China and is viewed in friendly terms, both by Russia and the former Soviet republics. So India has a very strategic role to play in the SCO. So what is it? India has a very strategic role to play in the SCO. इसका strategic role twofold है. It has twofold role. इंडिया का twofold role है. पहला इसका क्या है? जो हेजमिनी है चाइना की उसको डिसॉल्व करना. अब हेजमिनी ऑफ चाइना कैसे? जो चाइना के सारे जो वो 4 या 5 लोग जो चाइना के लिए कंसिस्टेंटली वोट करते हैं उनको काउंटर बैलेंस कैसे कर सकते हैं? उनको काउंटर बैलेंस कर सकता है इंडिया बाय ब्रिंगिंग इन जापान, बाय ब्रिंगिंग इन साउथ कोरिया, बाय ब्रिंगिंग इन ताइवान, बाय ब्रिंगिंग इन फिलीपींस, इंडोनेशिया. These countries will help to balance out the hegemony of China. Along with that, India has excellent relations with Uzbekistan. So India should think of a new kind of a setup along with Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, Philippines, and Kazakhstan. Sorry, when I said Uzbekistan, please rub that out. That is Kazakhstan. So India has very good relations with Kazakhstan और ऐसा मानना है स्ट्रेटेजिस्ट का, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का कि ये ग्रुपिंग तो ठीक है, इंडिया को ये मेंबर्स लाने चाहिए एससीओ में और नहीं तो एक अपनी ग्रुपिंग बनानी चाहिए जिसमें कजाकिस्तान हो. कजाकिस्तान इज ऑलरेडी फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड अ मल्टी वेक्टर पॉलिसी. Kazakhstan is already following what is called a multi-vector policy. और ये इसकी multi-vector policy मतलब it has great trade relations with India, Japan and South Korea. तो एक तो सबसे पहला कि इंडिया को जो है चाइना की हेजमनी को डिसॉल्व करना है और ये मल्टी-वेक्टर पॉलिसी फॉलो करके उसकी हेजमनी को तोड़ना है. तो या तो एक और नई ग्रुपिंग इंडिया बना ले और समय के साथ आप देखेंगे कि ये कैसे होगा, और नहीं तो इसी ग्रुपिंग में इन लोगों को, इन कंट्रीज को जोड़ लिया जाए, ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है. दूसरा, इंडिया हैज अ पॉलिसी ऑफ non-aggression and respecting the territorial rights of sovereign states. Having said that, the former republics of Russia look up to India as an alternative trade partner because they realize कि यहाँ पे कम से कम कोई डेट रिडन या एक डेफिसिट ट्रेड रिलेशन ना हो जाए. और इस वजह से इंडिया का सेंट्रल एशिया अलोन पहले ट्रेड था 1.4 बिलियन और आज की डेट में कितना है? 2.4 बिलियन बढ़ चुका है इंडिया का ट्रेड with the Central Asia or what is called the Eurasia, with the Central Asian countries. India has a lot to offer in terms of space research, in terms of science and technology, in terms of computer or what is called cyberspace. Along with that, its agricultural research is of much value to these regions. तो ये इसका एक तो ये आपको बता दिया कि हेजमनी चाइना की तोड़े.
दूसरा, ये कंट्रीज ऑलरेडी चाइना के साथ एक एडवर्स ट्रेड रिलेशन में है, तो इंडिया के सपोर्ट से दे कैन कम आउट ऑफ दैट. तो इंडिया बिलीव्स इन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी and the sovereignty of all independent countries, and therefore trade relations with India are being supported by these countries. The other thing which Prime Minister Modi had propagated at the time of the meeting of the Council of the Head of States was regarding an alternative medicine research center, or what is called the health diplomacy of India. ये हेल्थ डिप्लोमेसी कोविड-19 की वजह से मोदी जी का कहना है कि हमें एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्लेटफॉर्म को प्रोपगेट करना चाहिए इस रीजन में. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. फिर एक बुद्धिज्म को लेके इस रीजन में बहुत मान्यता है, तो बुद्धिज्म को भी प्रोपगेट, मतलब जो बुद्धिज्म से रिलेटेड, नॉट प्रोपगेट, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उनको भी इंडिया शोकेस करे. ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है. और जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चाइना का रोकना. तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का इंडिया ने कैसे काउंटर बैलेंस किया? Prime Minister Modi talked about the linkages of this area in Eurasia, but at the same time, it said that we have to look for alternative routes, not necessarily one belt, one road. वहां पे तो इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया और कहा कि हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाना चाहिए, और ये ऑल्टरनेटिव रूट जो है सेंट्रल एशिया को कवर करना चाहिए अंडर द यूएन इनिशिएटिव. So PM says that we should have an alternative route for linkages in Eurasia under the aegis of the UN. आपको SCO पढ़ाने का इतना लंबा रीजन ये है कि ऑल्दो ये आ चुका है, बट बिकॉज ऑफ चाइना स्टैंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट नो द डिटेल्स ऑफ SCO. तो इसको अगर आपने अब एक बार पढ़ लिया तो ये आपके दिमाग में हर समय रहेगा. इट विल हेल्प यू विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस and understanding international relations in a better perspective. We are going to just about now conclude with it. So he says that we should have an alternative route to this, but it should be under the aegis of the United Nations. That is what is being propagated by the Prime Minister. And he said that there should be a plurality of connectivity. तो उसने ये नहीं कहा कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को हम सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उसने कोई कमेंट नहीं किया. हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमारे पास एक प्लूरैलिटी होनी चाहिए, मतलब ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए और बहुत से तरीके होने चाहिए एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए. तो प्लूरैलिटी ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्लूरैलिटी ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट्स. So he's talked about an international corridor, which connects north and south through the Chabhar port and the Ashgabat agreement. That is what the Prime Minister of India has propagated, reflecting and respecting the sovereignty of the countries. That is exactly what he said. He said there has to be a plurality of connectivity of projects, and that internationally, north and south there should be a transport corridor, an international north-south transport corridor connecting related to Chabahar port and the Ashgabat agreements, respecting the sovereignty and the territorial integrity of
each nation. Russia too is apprehensive of China. Too is apprehensive of China. Do you know why? Because China said that the city of Vladivostok, वो हिस्टोरिकली चाइना की सिटी है, ऐसा ये रशियन सिटी है, और व्लादिवोस्टॉक को चाइना कहता है कि ये हिस्टोरिकली एक चाइनीज सिटी है और यहां से ही चाइना पैदा हुआ. सो the Russian president was totally taken aback by this, and that is why Russia and the Central Asian countries look forward to India's presence in the SCO, not only as a trading partner, but also to control the hegemony of China and what is called the Chinese Middle Kingdom Syndrome. मतलब मैं बीचों बीच में अपना राज्य बनाऊंगा. Middle Kingdom Syndrome. That brings us to an end of SEO. We have done all the organizations. You can go back and write the comparison of each organization with each other. किसी के पास किसी प्रकार के सवाल हो वो आप मुझसे जरूर से टेलीग्राम में पूछ सकते हैं. अगर आप कोई आंसर लिखे इनके बारे में मुझसे जरूर शेयर कीजिए, मैं उसको चेक करूंगी और आपको बताऊंगी. इट वुड बी गुड इफ यू कुड मेक अ कंपैरिजन बिटवीन SEO and AUKUS and BRICS together with Quad. If you could do all the four together, that would be great. Put it on a spreadsheet and see how all the organizations are. और अगर आप ये फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.